Hello my dear students. In previous video we discussed about the different forces in mechanics. So now consider about the friction forces. Okay, so in this video we have to discuss about the frictions in detail. So let's start. Now before the starting about the basic things about the frictions, we already know about the different things about the frictions. Frictions लगना जरूरी है. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल हम हमारी कार एंड रोड एंड कार का जो टायर होता है उन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन लगना जरूरी है. सपोज फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, द कार विल बी स्लिप. ठीक है, तो उसका स्लिप हो जाएगा. सो फ्रिक्शन विच इज नेसेसरी, बट वो कितना लगेगा दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Okay, so let's consider about the basic things about the friction. So friction, that is what whenever a body moves or tends to moves over the surface of other body. क्या इधर बताया हुआ है, a body moves or tends to move over the surface of another body. So a force comes into which at parallel to the surface of the contact, and that is also opposes the relative motions, and this opposing force is called as a friction. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट जो है वो हमें राइट आउट करना है. व्हाट इज फ्रिक्शन? सो दैट टाइम वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट. ओके, यानी कि इधर क्या बताया क्या हुआ है कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है. ठीक है, बॉडी मूव कर रही है, उसके साथ साथ में दूसरी जो सरफेस है, सो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है. बट वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है विच आर अपोज कर रहा है, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज अ व्हाट, फ्रिक्शन. सो कहां से आता है ये फ्रिक्शन? सो ओरिजिन ऑफ द फ्रिक्शन, दैट मींस व्हाट, व्हिच इज ओनली बिकॉज़ ऑफ द इरेगुलर सरफेस. हमारी जो सरफेस होती है वो इरेगुलर होती है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन फ्रिक्शंस लगता है. सो नाउ कंसीडर वन एग्जांपल. सपोज ये मेरा रोड है, दिस इज अवर हाईवे और वी कैन से नाउ वन कार इज मूविंग. ओके, सो कार का हमें टायर इंस्टेंस कर लेते हैं. ठीक है, सो नाउ जो कार है वो मूव हो रही है, यानी कि ये रोटेशन हो रही है. सो ये जो सरफेस है, अभी हमारा जो रोड है which is our what, irregular surface, which is not an irregular surface. That means if we are assuming that the road surface which is like this one, which is not smooth. ठीक है, so that is friction between them. But over here the car which is moving in this direction, the friction which is into the opposing in this direction. That means the friction force which is into the parallel to the surface but which are opposing to the this direction. Okay, so origin of the frictions which is only because of what, irregular of the surface. Okay, now consider in detail about that thing. So consider one object. So let's consider this object. So one object which is in one surface. So भाई हो क्या रहा है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है. So suppose directions of the motion which is in this direction, which is shown in the figure. अभी ये directions में suppose object move कर रहा है. So as we discussed in this definitions, parallel and opposing, okay, opposing जो force लग रहा है and which is considered as a friction. So इसके opposing direction में force लग रहा है, so that considered which is considered as a friction of forces. Now into figure number B, वो almost nearly equal to same दिख रहा है, but वो same नहीं है. So let's consider that over here. So ये over here the body which is remaining as the same, वो body का body वही रहेगी, वही है. Now direction of motion, अभी ये हमारी body है, suppose ये directions में जा रही है. पहले कहाँ पे जा रही थी, ये directions में जा रही है. अभी कहाँ जा रही है, ये body का movement ये directions में होगा. So the frictional force which is opposing to this one. Okay, so ultimately हमारा conclusion इधर क्या निकल रहा है कि सपोज बॉडी हमारी मूवमेंट इधर हो रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा. सिमिलरली ये जो मोशंस ऑफ दिस बॉडी व्हिच इज इन दिस डायरेक्शंस, सो दैट टाइम फ्रिक्शनल फोर्सेस कौन से डायरेक्शंस में होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगा. दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस
always opposes the relative motion of the body. So जो हमारी जो बॉडी होती है, जो बॉडी की जो मोशन होती है, उसका अपोज करता है कौन? फ्रिक्शन. ठीक है. So now there are different types of the frictions. Okay, so let's consider basic things about the frictions, types of the frictions. We have to go in the detail about these types of the frictions, but let's consider a little bit concept about this one. So now, as per the figure number 8. So over here we are considering one object. Okay, अभी object ये directions में, कौन से directions में? Suppose ये directions, F directions में एक force हम लगा रहे हैं, यानी कि उसकी motion होगी, ठीक है, movement होगा. So उसके exactly opposite directions में क्या लगेगा? ये directions का activity क्या लगेगा? Fs. Now what about the Fs? Fs which is known as a static force, और हम बोल सकते हैं उसको simple force. And what about the F? F that means हमने इधर क्या लगाया हुआ है? F that means applied force on the body. So ये directions में हम force लगा रहे हैं, and उसके as we discuss in this one, उसके opposite side में frictional force लग रहा है. So उसको मैंने नाम दे दिया, क्या दिया हुआ है? Fs दिया हुआ है. Okay, so this is all about Fs. Fs that means what? Static or we can say as a simple force. Now, अभी ये बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही है. ये बॉडी की मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है? As we know that हमारे ये डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है और उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस में Fs यानी कि स्टैटिक फोर्स लग रहा है. So at this condition suppose ये मेरा 10 न्यूटन है और एक्जैक्टली उसके ऑपोजिट साइड में भी 10 न्यूटन का ही फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है. So that will be at the rest condition. ठीक है. So ये कंडीशन में क्या हो रहा है कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी व्हिच इज एज इट इज रेस्ट कंडीशन. नाउ अभी हम क्या करते हैं? इधर फोर्स इंक्रीज करते हैं. So when we are increasing the force and once the limit which is crossed, यानी कि Fs frictional force के जो मैक्सिमम की लिमिट से ज्यादा हो जाता है, then and then body will be moved. So इधर कंडीशन में हमें बताया हुआ है कि फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्शन में ही लग रहा है. Now we are increasing the force, so क्या हो रहा है? किसके यानी कि हमारे रेफरेंस वैल्यू क्या है? So let's consider that this is our 10 Newton and into the opposite directions this is also 10 Newton. So अभी ये कंडीशन में क्या होगा? So here summing up, so ये मेरा 10 Newton है प्लस ये opposite directions में जा रहा है, तो हम suppose -10 ले लेते हैं. So this will be 0. 0 that means we can say as which is at the rest condition. Okay. Now once this limits cross, यानी कि Fs की जो वैल्यू है suppose 10 Newton ही है. Now we are increasing the something force. So suppose ले लेते हैं हम 10 Newton. So 12 Newton. So 12 Newton यानी ये 12 Newton है और ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है सपोज मैक्सिमम हम कंसीडरेशन करते हैं 10 Newton. So होगा क्या? This body will start to move in this direction with some velocity. So see as you figure, this is our object. तो ये जो मैक्सिमम लिमिट्स को क्रॉस कर देगा, तो तब तक क्या होगा? हमारी बॉडी विल मूव. सो व्हिच इज हैविंग समथिंग वेलोसिटी. सो एज वी नो दैट ये हमारा फोर्स तो लग रहा है एंड एज वेल एज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बट एक्जेक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस देयर इज समथिंग Fk. सो व्हाट इज Fk? Fk दैट मींस काइनेटिक फोर्स. ओके, हमारी बॉडी मूव हो रही है, मोशंस में है, तब जो फोर्स लग रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शंस में Fk, so which is known as a kinetic force. And what about the Fs maximum? Fs maximum which is nothing but the maximum static force. ज्यादा से ज्यादा जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोल सकते हैं Fs maximum. Okay, so and also we must have to remember what Fk which is less than Fs maximum. That means what? जो हमारा काइनेटिक फोर्स है वो लेस देन Fs मैक्सिमम. ये मैक्सिमम जो वैल्यू है स्टैटिक फोर्स है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम ही होता है हमारा कौन? Fk. Okay, so this is the basic things about the types of friction. Okay, into the next video we are going to discuss in detail about this Fs static, Fs static as well as Fs maximum, as well as we also have to consider about the friction. If our body which is the smooth
if our body which is irregular. Okay.